M guessed that the conversation was about worldly men who look down on those who aspire to spiritual things. The Master was talking about the great number of such people in the world and about how to deal with them. Master, to Narendra: how do you feel about it? Worldly people say all kinds of things about the spiritually minded. But look here. When an elephant moves along the street, any number of curs and other small animals may bark and cry after it, but the elephant doesn't even look back at them. If people speak ill of you, what will you think of them? Narendra: I shall think that dogs are barking at me. Master, smiling: oh no, you mustn't go that far, my child. Laughter. God dwells in all beings, but you may be intimate only with good people. You must keep away from the evil-minded. God is even in the tiger, but you cannot embrace the tiger on that account. Laughter. You may say, why run away from a tiger, which is also a manifestation of God? The answer to that is, those who tell you to run away are also manifestations of God, and why shouldn't you listen to them? Let me tell you a story. In a forest there lived a holy man who had many disciples. One day he taught them to see God in all beings, and knowing this, to bow low before them all. A disciple went to the forest to gather wood for the sacrificial fire. Suddenly he heard an outcry: "Get out of the way! A mad elephant is coming!" All but the disciple of the holy man took to their heels. He reasoned that the elephant was also God in another form. Then why should he run away from it? He stood still, bowed before the animal, and began to sing its praises. The Mahout of the elephant was shouting, "Run away, run away!" But the disciple didn't move. The animal seized him with its trunk, cast him to one side, and went on its way. Hurt and bruised, the disciple lay unconscious on the ground. Hearing what had happened, his teacher and his brother disciples came to him and carried him to the hermitage. With the help of some medicine, he soon regained consciousness. Someone asked him, "You knew the elephant was coming. Why didn't you leave the place?" But he said, "Our teacher has told us that God himself has taken all these forms of animals as well as of men. Therefore, thinking it was only the elephant god that was coming, I didn't run away." At this the teacher said, "Yes, my child, it is true that the elephant god was coming, but the Mahout god forbade you to stay there. Since all are manifestations of God, why didn't you trust the Mahout's words? You should have heeded the words of the Mahout god." Laughter. It is said in the scriptures that water is a form of God, but some water is fit to be used for worship, some water for washing the face, and some only for washing plates or dirty linen. This last sort cannot be used for drinking or for a holy purpose.
In like manner, God undoubtedly dwells in the hearts of all, holy and unholy, righteous and unrighteous. But a man should not have dealings with the unholy, the wicked, the impure. He must not be intimate with them. With some of them he may exchange words, but with others he shouldn't even go that far. He should keep aloof from such people. सूत्रधार, यदि व्यवहारिक सत्ता मिथ्या है, तो इस संसार में व्यक्ति व्यवहार कैसे करे? सही और गलत का निर्णय कैसे ले? नटी, ईश्वर ने मनुष्य को जो विवेक प्रदान किया है, वह शुभ अशुभ, ज्ञान अज्ञान, प्रकाश और अंधकार के भेद को समझने के लिए ही दिया है। कैसे? चलो मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक थे गुरु और एक था उनका शिष्य। गुरु ने शिष्य को यह शिक्षा दी कि हर प्राणी में ईश्वर है। शिष्य ने यही शिक्षा ग्रहण की कि हर प्राणी में ईश्वर है। फिर एक दिन शिष्य यज्ञ की समिधा लेने वन में गया। समिधा एकत्र कर जब वह वन से वापस लौट रहा था कि भागो, बचाओ, मेरा हाथी बोरा गया है, भागो, बचाओ। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? हाथी से हो रहा है, भाग, अपनी जान बचा। अरे ना जाने लोगों को क्या हो जाता है। अरे इसमें इतना भयभीत होने की क्या बात है? मेरे आचार्य ने तो यही सिखाया है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर होता है। मैं भी ईश्वर, वह हाथी भी ईश्वर। ईश्वर को ईश्वर से भय कैसा? आने दो हाथी को। ईश्वर ईश्वर का अहित कैसे कर सकता है? आज ईश्वर का ईश्वर से साक्षात्कार होने दो। भाग बटू भाग, अपनी जान बचा। मेरा हाथी मेरे नियंत्रण से बाहर है। भाग बटू भाग, भाग। अरे महावत, मुझे ईश्वर से भय कैसा? कैसा महसूस कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास हो, अपने गुरु के गृह में सुरक्षित हो। आचार्य, लेटे रहो, लेटे रहो। क्या मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं आचार्य? हड्डियां तो फिर से जुड़ जाएंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। सेवा मुझे आपकी करनी चाहिए। सेवा मैं आपसे करवा रहा हूँ। यही तो गुरु और शिष्य का संबंध है। पर तू एक बात बता, तुझे सामने से आता हुआ इतना बड़ा हाथी दिखाई नहीं दिया? वह मुझे दिखाई दिया था आचार्य, पर आप ही ने तो कहा था कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर होता है, इसलिए मैंने उसकी चिंता नहीं की। पर उसने मुझे सूंड से उठाकर पटक दिया। तुझे हाथी में ईश्वर दिखाई दिया, पर वो महावत जो चीख चीख कर तुझे सावधान कर रहा था, तुझे उसमें ईश्वर नहीं दिखाई दिया। और वो हाथी कैसे जानता जिसे वो मारने जा रहा है उसमें ईश्वर है? क्या हाथी में वो विवेक है?